Everyone. Welcome and thanks for joining today's webinar. This is the 16th session of the HIV Awareness, Prevention and Education Project in Pakistan, designed and led by Apna Merit HIV Committee. This project aims to reduce HIV stigma, increase HIV awareness, and increase knowledge about HIV disease among the healthcare communities in Pakistan using educational and research tools. Please note that this committee is not affiliated with any political party in Pakistan. This project is a totally volunteer academic activity, and all views presented in these webinars are presenters' own views and do not necessarily reflect their institution. So after this little intro, I will go ahead and introduce our first speaker, Dr. Fiza Gilani, who is a research track faculty at Alpert Medical School of Brown University, Department of Medicine, Division of Infectious Disease, Rhode Island, USA. She has been affiliated with this department since 2003. At her job, she's involved in HIV-related research at national and international level. Her role as faculty member is to guide junior faculty, ID fellows, residents, and medical students in their research projects. She is also a faculty in different cores of Providence Boston Center of AIDS Research, CFAR, and participates in many NIH-funded research grants. Her secondary field is medical informatics and analytics. She serves as informatics director for the Ryan White program and Providence Boston Center for AIDS Research program at her institution. She has a deep passion to help the people in healthcare systems to curb the HIV epidemic in developing countries, especially her own beloved country, Pakistan. She started HIV Awareness Project in 2019 after the HIV outbreak in Sindh on a special request from local doctors. And she, with the help from her CFAR colleagues, delivered HIV educational webinars to the local doctors of Larkana area at that time. That was the time when she realized how much work is needed in Pakistan in HIV field. She decided to continue her HIV education and awareness project in Pakistan. She has been an affiliated member of APNA and APNI from last 20 years or so. On her initiative, HIV committee was created at Apna Merit platform in January of 2021, and she became its first chairperson. Her current project entitled Build Capacity is based on her previous projects that were completed in 2019 to 2021. I will ask Dr. Fiza Gilani to take over from here. Bahut shukriya, Fazia, for this nice, kind introduction. So let me start my screen first. So this presentation is by me and then my team, Saima Abbas, Fazia Kamar, Yusuf Sheikh, Hamad Ali, and many other members of HIV committee. Bismillahirrahmanirrahim, and thank you for joining. Assalamu alaikum. So in today's presentation, we will demonstrate an example from USA. Actually, HIV care providers need to understand the level of support people living with HIV need in their lifetime, along with HIV treatment services. We are presenting our build capacity model and idea based on an integrated care system from USA. And we are hoping that participants in this group will realize the benefits of adopting this model in near future. Thanks for joining us again. So these are four different objectives. We want you to understand the level of support services, understand the model of integrated care, visualize how to increase capacity by using this model, and realize the benefits of build capacity project. We'll go in detail in every aspect of this in next slides. So presentation plan today is
I'll be presenting the HIV integrated care program using a model from USA. And then I will present the outlines of our build capacity project and different roles and benefits. And then we'll go to next steps, what to do in future. And again, as Fawzia said, we do not have any conflict of interest, and we do not affiliate ourselves with any political party in Pakistan. So this is a slide for HIV information, but I don't think we need to discuss this in this group. If anyone needs any information, please contact me. I will send you the slide. So HIV care continuum is a road to follow for all HIV care, the HIV care for the HIV positive patients. Patients need to diagnose with HIV, then they need to be linked with the care as soon as they are diagnosed, and they should be starting AART medications. Once they are on medication, they need to be retained in care to achieve viral load suppression. And viral load suppression is an indicator of healthy life and non-transmissibility of HIV virus. So HIV care continuum is a common concept in our field. So in next few slides, I'll be talking a lot about Rhine-wide funding. For those of you who do not know about this program, Rhine-wide was a 13-year-old boy with hemophilia from Indiana, USA. He was diagnosed with HIV in 1984. Due to high HIV-related stigma in the USA at that time, he was barred from school, from social activities, from community recreational programs, from his own group of friends, and even from his relatives. So his parents were very educated, and they started to take a stand against all of this. And they started a big campaign to increase awareness of HIV in the USA. So here a note for Dr. Omer and this group, that we started our awareness campaigns only last 2 years, and Rhine-wide's parents took 6 years to do this. So don't get discouraged with our current momentum. So Rhine-wide's parents, they pushed the federal government to help the patients with HIV. And the fight went on for almost 6 years. And after the death of Rhine-wide, he died in 1990, the US Congress passed a major piece of AIDS legislation that is called the Rhine-wide Care Act. And this was signed into law by President Bush in 1990. This funding has been reauthorized twice. And currently, Rhine-wide programs are the largest provider of services to the people living with HIV in the United States. So Rhine-wide Care Act is the largest funding for clinical care, actually. So Rhine-wide Care Act funding, it does not come to HIV clinics automatically. They have to apply to get this funding. Once funded, they are subject to strict audits, reporting requirements, and are responsible to show better clinical outcomes. They are also required to submit annual patient level data. That data has like 74 different data items, very strict reporting requirements. And they have to submit non-competing progress report every year. And they have to compete for next 3 years funding every 3rd year. So it's a continuous work which Rhine-wide clinics have to do. And these are the list of actually Rhine-wide funded services. They require HIV clinics to provide core medical services. These services include outpatient ambulatory care services, medical case management, oral health, hospice services, mental health, medication, nutrition, and substance use.
And in support services, they include non-medical case management, emergency financial assistance, food bank, housing services, linguistic services, and medical transportation. So on top of all these services, we have AIDS drug assistance program. It's called ADAP. AIDS pharmaceutical assistance program and health insurance premium and cost sharing. So these all are funded by Rhine-White, but again, remember that we are very heavily actually subject to audits and reporting. So after getting this funding and or if you really want to be at the like to provide the best services, all healthcare providers and agencies need to realize these needs of the patients, and they need to plan to create integrated programs to achieve the desirable outcomes. So in a nutshell, authorities need to assess the HIV care continuum outcomes, and they need to make plans to integrate their services to create the better clinical outcomes. And this presentation will demonstrate how to increase capacity of these services without putting extra burden on government or donor agencies. So for this, I'm using an example from Rhode Island. And why I selected this. This is a clinic. It's called Infectious Diseases and Immunology Center. It is at the Mariam Hospital, and the Mariam Hospital is an affiliated hospital of Brown University. Why I selected this clinic? Because I have been working with this system last 20 years. And as faculty, a research track faculty, and as Fawzia mentioned, I am informatics director for Rhine-White program and for CFAR. Center for AIDS Research is a big NIH funding, and we call it CFAR funding. So I have been working with this, and I have witnessed this clinic, which is Immunology Clinic was the name of HIV clinic. But in recent years, this infectious diseases is the overall umbrella. And then we have different clinics under that. So we call HIV clinic as Immunology Clinic. So what we do at this system is the Mariam Hospital Infectious Diseases and Immunology Center. We provide HIV care services and other ID services. In HIV care services, we provide diagnosis, HIV treatment, and free care is provided to all those who qualify for that. And everyone else, they pay with either their insurance or they pay from. Sorry, I have to cut. Dr. Busha Jamil is saying she is unable to join. Please send her the new link. Please contact with her. So other than HIV services, we provide other ID services. These are the hepatitis B and C treatment, COVID-19, monkeypox, journal ID, and then OPAT services. So all these services from HIV to until OPAT, we provide in this building with the picture I showed you. This is a big clinic, third floor of a building. And we have three other clinics. These are the state TB clinic, STI clinic, and then Lyme disease clinic. They are in separate buildings, but they all come under the infectious diseases umbrella. And we have one medical director, Dr. Joe Garland, who was our presenter in 2019 and 2021. And so this is the list of services we provide. So in these days, we are required to provide social determinants of health services. And in these services, can you please someone contact Dr. Bushra Jamil? Yes, Fiza, I'm working on it. Go ahead. Okay, sure. Thank you. Yeah, so I'll mute my phone. So we provide social determinants of health services, and they include programs to address food insecurity. We have two programs, emergency food assistance and food assistance program for all those who qualify.
We have programs to address medication access. This is the over-the-counter access program and free STI treatment for all. In transportation, we provide transportation services to those who cannot afford to come and means to make their appointments due to the funding issues. So we provide them round trip Uber, Lyft, or medical transportation. We have 113 patients who had availed these services last year. We also provide housing. We have 15 housing units, and this is through a community partnership. AIDS Care Ocean State is a community partner here in Rhode Island. And these housing units are fixed for homeless HIV patients, positive patients, and for anyone who is in dire need of housing. So who we serve? And now I'm talking about immunology center only. This is the HIV clinic. We have only 2,000 active patients for the calendar year 2021. 73% are male, 63% white, 32% African American. I'm sorry, I wrote this word black here. So we have 26% Hispanic, 74% non-Hispanic, 27% foreign born, and 48% MSNs. It's a big number. And 99% of these 2,000 patients, they are on ART. And 92% of these 2,000 patients have achieved viral load suppression. And 96% of the patients from 2000 had at least one medical visit in 2021. And these are the performance measures which we are required to report to the government. So what is the clinic composition? So now it's a little bit tricky. This clinic composition or all this clinic staff, they are for all those ID services which I showed you in the slide. So they provide all services together. We have 4 secretaries, 4 medical assistants, and all this list you can read. At the end, you will see 28 prescribing clinicians. We have 19 medical doctors, 5 fellows, 2 physician assistants, 2 nurse practitioners, but only 6 to 8 clinicians at any given time are present in the clinic, and they provide all those services which we discussed earlier. And please note that all these 19 medical doctors, they teach courses in the Brown Med School. They are very heavy international level researchers. They see patients in outpatient setting, as well as they see patients in 4 different hospitals, which are Brown University affiliated hospital in our state. And if you see the names of these 19 MDs, most of them were our presenters in 2019 webinars, and most of them were also presenters or panelists in our 2021 webinars. And so they work very closely with me, and they are very interested in our HIV awareness program, and they are ready to help on any way. And this is my division. I'm so proud of them. So in a summary, these 19 MDs, they are teachers, they are researchers, they are clinicians, and they are big volunteers. So what resources we have available to us? We have national Rhine-wide program funding. I detailed the Rhine-wide funding earlier. We have patient payments, including patient private insurances and federal programs, Medicare or Medicaid. And we provide free services to those patients who cannot afford the private insurance or private payment, the self-payments. Then we have Mariam Hospital support. Mariam Hospital is a Brown affiliated hospital, and they provide the clinic building and everything. Then we have Providence Boston Center for AIDS Research. We call it CFAR. It is a NIH funding, and NIH has 21 CFARs all over USA, and we are one of them. So from this funding, though this is a research funding, but many of our MDs or clinic staff, they get salary support from this funding.
We have many other research grants, R1 level or NIH or CDC or all these agencies. And many of our staff members or clinicians, they get funding support or salary support from them. So other than these funding sources, we have our whole group of physicians. They all are faculty members of the Alpert Medical School of Brown University. And we have a few training programs. We have medical students. We have clinic residency programs residents. We have clinical ID fellowship programs, and we have their clinic ID fellows. We have research or T32 programs, and we have the research ID fellows. Clinical ID fellows, research ID fellows, residents, medical students, and physicians. And all those staff members which I listed earlier. So these are our resources, and we provided a large range of services. And I'm very proud to say that we are very highly ranked clinic, even in Limelight program at the USA level. So this is the end of example. And thank you very much to the patients, staff, and physicians of the Immunology Center. This is a picture of our new building and all different staff members. So now, based on this, before I start, do you have any questions? Or maybe I will address all questions at the end. So based on this academic medical center concept, we propose that local medical colleges in Pakistan should adopt their local ART centers to create state-of-the-art HIV programs. And please note, we are not proposing any changes to the NACPs or provincial AIDS control programs to change their practices or ownership of ART centers or anything in this domain. So now this is the idea and how and what we need to do to get this. So we all know that we have 49 ART centers providing free ART medications in Pakistan. So this build capacity project, we aim to develop and strengthen the skills and ability of these ART centers or overall healthcare system to provide better HIV services in Pakistan. And we aim to develop processes that are sustainable actually by using local academic institutions and partnered with local ART centers to develop state-of-the-art HIV clinics. And this will ultimately help control future HIV transmissions. So to get this, we propose that local medical colleges are encouraged to adopt their local ART centers to build mutually beneficial partnerships. And these partnerships will improve the lives of patients and build a pipeline of future healthcare professionals in this field. This is very important. We need to encourage young physicians to come into this field, HIV or other ID fields. This is a simple representation of this model. We have ART centers here. So just a comment here, instead of when we call a clinic ART center, we are introducing a huge level of stigma by ourselves. Instead of calling ART center, if we call them immunology center, that will be much better, or any other word which is not ART or HIV. So these are our current ART centers. We have National AIDS Control Program providing support to them, and then we have provincial AIDS control programs providing support to these ART centers. So we do not actually propose any changes here, but they can see how model works and if they want to adjust their services or their support. And then we have community organizations. I'm not sure how much support is given to ART centers from community organizations, but we can always start that.
So medical schools are the ones which will be creating the partnerships with ART centers. And in this partnership, both of them can benefit. ART centers can benefit from medical schools and medical schools from ART centers. So here I listed the international resources. This includes Apna Merit HIV Committee. This includes Providence Boston CFAR. And this also includes all the institutions from where our HIV committee members are coming from. This also includes Apna alumni associations of different medical colleges. So this is a kind of integrated system which we are proposing, and we are looking forward for your comments. So in next few slides, I combine the roles and benefits together because separating them was very difficult. So at first stage, HIV committee members, Providence Boston CFAR, and faculty members from different universities and all other volunteers. They will provide their services free of cost to the participating medical colleges and ART centers. They can provide training to ART staff on fixed intervals. They can provide training materials for students, junior staff, and ART faculty, ART staff. They can do online HIV sessions with international HIV experts. We have been doing this since 2019, and we'll continue doing this. So we can also work with the different alumni association from different medical colleges to support their medical college on this adoption initiative. Then National AIDS Control Program and Provincial AIDS Control Program, as I already mentioned, we are not proposing any changes to them. So these are the medical schools, and we have long list for medical schools and IRT centers. So ultimate purpose of teaching medical students in any medical college is to educate them to prepare for future healthcare fields, especially HIV and emerging infectious diseases, especially after COVID and monkeypox and so many others. So we know that we need to prepare them well. So medical colleges, they need to teach their students about privacy and confidentiality. They need to offer preventive services by learning more about HIV prevention services. And they need to teach their students respectful, non-judgmental, and professional behavior while dealing with patients, especially patients living with HIV. And medical colleges can also offer HIPAA training and compliance courses, basic courses about HIV in the classrooms. And if they don't have faculty, they can use their affiliated ART center doctors. So then they can offer infection control courses, and they should be, hopefully they are already offering this, but I just included that in the slide. And they can train students to provide counseling before and after HIV training, after HIV testing. They can train students to adopt safe practices in healthcare by not reusing needles from one patient to the next. And this is very important to stop future HIV infections. They can also train their students to create awareness in patients about the consequences of needle sharing in recreational drug use and other uses. So all of the above will help to deepen students' knowledge about the field and will also create empathy toward the patients and their communities. So clinical training, medical colleges, they can create clinical rotations for their students to go to these ART centers and get clinical experience. And this clinical experience may relate to treat HIV patients,
to counsel those patients, to create proper HIV regimen for the patients living with HIV. Students will get practical experience on how to follow best practices and standard precautions, and this needs to be taught at both levels. So, benefits in research in HIV and public health field. We suggest that medical colleges can assign students to write a research paper or small report during their rotation on HIV in their local ART center, or even present cases in the clinical meetings. And they should require senior faculty to mentor the students and publish research outcomes together. They can also create community education teams for students, faculty, and in collaboration with social work agencies or NGOs. It's all about working together. And they can offer infectious diseases courses, arrange conferences and webinars with help from international experts. And students should be encouraged to create innovative programs or small projects to reduce stigma and or consequences of needle sharing. So ultimately, all this will also can create volunteerism in students. We see that students going to these ART centers can create volunteer projects, or they should be encouraged to do so. They may create community awareness programs, and maybe they can work with NGOs or CBOs together to create these community awareness programs. So we recommend that medical colleges should give these students who go to ART centers or do any project some benefits like course credits and scholarships or any other educational benefits. And that is to encourage them to do these activities. So benefits of this model for the ART centers. This can solve their HR issues, and this is like by using the students and junior faculty members, they can offer more services to their patients at their ART centers. Then ART physicians and staff can acquire latest knowledge and techniques by attending seminars, conferences, and other trainings offered by the medical colleges. And they can also serve as medical school faculty members. That's what we do here. To teach about HIV, they can mentor students and junior faculty members on HIV issues and projects. And these providers, we will suggest, should be given stipends for these teaching activities by the medical colleges. So these ART centers can refer their patients to medical colleges and other facilities for any kind of healthcare issues, including disease testing, inpatient care services, and a lot more. So professional development, we see that ART physicians and staff will have more chances to join affiliated medical college community for educational and professional development opportunities. And especially ART physicians can get chances to present complicated cases and get feedback on patient management. So after all these, in long term, these activities can possibly help reduce HIV stigma, encourage students to work in the HIV field and other ID field after completion of their medical degrees. And here, this is a very important point. In America, we have a new initiative from last 5 to 7 years. This is called Meaningful Use Initiative. So under that initiative, all the HIV providers are encouraged to be the primary care doctors for their own HIV patients because they understand their medical issues. So HIV physicians can also serve as primary care doctors for their patients too. So to do steps
For medical colleges, they should offer privacy and confidentiality education and training to all its medical students and even junior faculty before sending them to the ART center. And this is a very important point. So these medical colleges can offer their faculty, ART physicians, and ART staff different kind of training, like training in mentorship or even clinical training or clinic management training and other professional development activities. So ART centers should encourage and accept medical students to work with them, even medical students or ID fellows like we do here, or any research fellows interested in HIV research. And ART Center should do regular meetings between ART staff and students to find out where the gaps in service delivery are. And they should arrange HIV awareness, education, and treatment sessions with faculty working in the US. So from our side, HIV community or international professional health, we can offer training sessions in the participating ART centers. And we can help and guide medical students working in the ART centers to design their social work or their HIV research projects. So in summary, medical colleges partner with local ART centers in Pakistan and supported by volunteers of this International Project Alliance can play a vital role in controlling Pakistan's HIV epidemic through educating themselves, their colleagues, their students, their patients, their communities, and creating strategies that complement efforts by the government agencies. And here I stop. Thank you very much for listening to this long presentation. And these are our volunteer partners. So Saima is for you now. Thank you. Thank you very much, Fiza. Jazakallah. That was an excellent presentation. And I have to say that I would not be here if it was not for Fiza. And this whole Apna Merit HIV committee was a seed that was planted by Fiza. But as you saw, she has been passionately advocating for HIV since 2003. So this is it sounds like a very important step to engage the medical colleges to break the stigma around this disease. So excellent, Fiza. I want to share our format for the presentations or questions and comments. So we have about 6 panelists today, and this is a bilingual forum. And Urdu, English is the 2 languages that we are, whatever you feel comfortable in, jisme marzi aap jawab dena chahein. So the order will be that we will take comments from Dr. Afsha Isani, then Dr. Bushra Jamil, Dr. Atif, Dr. Idris, Dr. Khudadad, and then Dr. Umair. So I think I'm going to go to our first panelist, which is Dr. Afsha Isani. She is a Master in Health Policy and Management at Aga Khan, a public health specialist. She's part of the TB HIV programs, provincial and national level, and a provincial TB advisor for USAID in Pakistan. Currently, she is in Saudi Arabia. And Mubarak on your Umrah, Dr. Afsha. And Bismillah, please comment on our idea and what do you think are the challenges in implementation in the position that you are at, affiliated with one of the leading institutions in the country. Dr. Afsha. Thank you, Dr. Saima, and thank you, Dr. Fiza Gilani. I think what a fantastic presentation it was. Thank you for the kind wishes. I think it's an absolute delight and honor to be part of this distinguished panel. And like Dr. Fiza so well explained the entire scenario, I couldn't agree more on this, that what an important milestone it would be in the history of communicable diseases to achieve this if we can do this. Because you see, concerted ideas and concerted efforts are the basic cornerstone that we should be
vouching for, especially when it comes to treating and reaching out all the people suffering from HIV and other diseases. I would also like to take opportunity to add that TB, I work as a TB professional, but TB and HIV go hand in hand. And as we are aware that in the people living with HIV, they are more prone to acquire opportunistic infections, and TB being the #1 killer among those patients. So it is imperative, and now is the high time. So definitely, I completely agree. But yes, as much as this is a fantastic and a novel idea, there are some steps, there are some challenges that we might come across, and which is part of the whole deal, because you see, the first steps are the most difficult ones to take. But starting with the idea, the whole background knowledge is most important. And like very rightly and very nicely said by and explained by Dr. Fiza, that how it has been already being done in the US and many other countries. So of course, why not in Pakistan? That is absolutely, and one of the main objectives of this webinar as well. And as for the most important challenge, or I would say the starting point should be the starting of involvement of the government. And from the Sindh point of view, because I work for the province of Sindh, I want to add one thing. They are taking many good steps, many interesting and nice steps. And I think this would be one of the best steps to take when it comes to integrating the HIV service provision and the knowledge imparting among the undergrad students. And that's the most important thing, integrating it from the very basics, from the undergrad years. And I think I would definitely second this idea. And if the government, both from the national and the provincial level, kind of works with this panel, I don't find any rhyme or reason that this cannot be implemented. And the rest of the other small challenges, which could be like how to implement, from where to start, which colleges to start from, which faculty members, how to constitute the committee, they would be addressed subsequently. But the government ownership is the most important thing that should be coming and starting of this whole objective. Thank you very much. Thank you, Afsha. I have one question which is pertinent to your so you are running TB and HIV. How do you see the horizontal integration of these two clinics? Because I know there are TB clinics and HIV clinics. They kind of work in silo. How do you bridge those gaps? If you could comment on that. Okay, thank you very much for this question. And I want to add one thing, that from the perspective of Sindh, and then at the national level, because we have also representation from the national level, you see, we have the Ministry of Health got devoluted back in 2012. And as the process of devolution started off, we started integrating these communicable diseases, namely TB, HIV, malaria, hepatitis, into one program. So in 2020, we had the provincial government of Sindh, they integrated all these programs under the auspices of the communicable disease control. So all the TB, HIV, malaria, hepatitis, and other non-communicable diseases, they are now looked upon, they are taken care in an integrated manner. And same goes for the TB, HIV, malaria at the national level, taken care by the Common Management Unit. So currently in our province, I would add that this is right now, the government has been very committed. Right from the Ministry of Health, they are committed not only integrating in, but providing services. So if I talk about my province of Sindh, there are like more than 16, to be exact 19, including the private sector as well, ARV centers. Nearly all of them are located in big tertiary care hospitals, providing TB and HIV services side by side. So when the people living with HIV, if they suffer from TB, they can go to right next to, in the same building or in another buildings to seek the services for TB. So this is not working in silos as far as the province of Sindh is concerned. And at the national level as well, the Common Management Unit is overlooking all these three, and we have an advisor for all these three as well, Dr. Razia, who is overlooking this. So yes, it is. We are trying to integrate it as much as possible, and that is also in accordance to the UHC and the PHC guidelines as well. Thank you. Thank you so much, Dr. Afsha, and thank you for joining and for your sound comments. I think Dr. Bushra was able to join.
So our next comment will be from Professor Dr. Bushra Jamil, who is an infectious disease specialist at Aga Khan. She's the president of the Medical Microbiology and Infectious Disease Society of Pakistan. Bushra, are you here? Ji. Assalamu alaikum. And thank you for having me here. What a brilliant effort by you all. I think I'm extremely grateful to Dr. Fiza and yourself and the rest of the team for bringing us all together and putting together such important ideas which will have an immense impact on how we deliver services in Pakistan in the future. Acha, on paper and plans के मुताबिक ऐसा लगता है कि we are on the right track and we may be on the right track, but our progress has been very slow. And one important point is that people do not truly understand and are therefore unable to implement the integration between programs and projects and processes. So on paper, ऐसा लगता है कि integration की तरफ जा रहे हैं, लेकिन even residing within the same premises, people continue to work independently and sometimes even don't talk to each other. So एक बड़ी सी premises में you will have a medical college, you will have a postgraduate center or training opportunities in the form of a hospital, और वहीं पे OPD में एक general OPD चल रही होगी जहाँ से patients wards में admit होते हैं, और separate centers होंगे, TB का अलग, HIV का अलग, hepatitis का अलग, with different physicians who don't get an opportunity to talk to each other or don't feel it important to talk to each other. और एक मरीज जब आता है अगर HIV के क्लिनिक में एंड अप करता है किसी वजह से, और उसकी अगर वो रिपोर्ट्स ले आता है किसी तरह या उसकी स्क्रीनिंग कराई जाती है, then he is sent off to another clinic. और वहाँ उसके साथ क्या होता है, there is no way of knowing. So हमारा जो concept of integration है ना, वो यहाँ तक आके रुक जाता है कि एक premises के अंदर कर लिया, एक organization के अंदर सबको include कर लिया, but actual horizontal integration है नहीं. For instance, Afsha's presence here is very important because she is very familiar with how government and non-governmental organizations and even private hospitals work, and she actually helped AKU establish the HIV and TB programs. So इनको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि problems क्या हैं and how people insist on working in their own silos and वो integration हो नहीं पाती. So अफशा के efforts से अभी एक activity हुई थी HIV physicians के लिए, where we talked about TB. So it is very important to empower HIV physicians in management of other common infections, so they don't have to refer patients here and there. अपने मरीज को अपने पास रख के they can easily treat them. It's not about workload. It's not about having some specialized skills which cannot be imparted. So it's about having the will to actually horizontally integrate ये common problems. In fact, HCV should also be integrated. So एक इंसान अगर HIV center में आ रहा है, which should never be called an HIV center in the first place, एक basic health unit में या एक clinic में आ रहा है, तो वहाँ पे he or she should be able to get all the basic diagnostic facilities and management facilities instead of the patient being sent here and there to 4 different places. So these were my thoughts. Bushra, one point is, how do you think the medical colleges will receive this idea of adopting their local ART center? I think things have changed over the years. So itna खौफ नहीं है अब HIV का, and many people perceive it as an infection, and our infectious diseases fraternity is also expanding. So जहाँ जिन organizations में infectious diseases as a specialty मौजूद है, वहाँ पे निस्बतन आसान होगा, लेकिन I think people will embrace this idea. It has to be presented in the right manner to the right people and then pursued.
اور اس کا سکسیس بھی شو کرنا امپورٹنٹ ہوگا, بیکاز دس کین بی ڈن if you have an enthusiastic dedicated group to take it forward. Inshallah. Well, we are full of enthusiasm. So, Saima, can I interfere for a moment? Yeah. So I can see a few raised hands here. So can you please wait until all 6 of our panelists are done with their comments? And Dr. Asman Sim, please stay there. Dr. Sani, I saw your raised hands. Please stay there. And for Dr. Bushra, actually our next year plan for 2023 is follow this project with all possible levels. So we will need your help and this help from all of these members present today. You Sure, are sure. our actually initial team. Thank you. Thank you, sure. Okay, so we're going to quickly move on to Dr. Atif Ali. He is the Provincial Treatment Coordinator of the Punjab AIDS Control Program. And we would love to hear how you perceive our idea. And thank you so much for joining. Please go ahead. Assalamu alaikum to all of you. I have 2 requests to all of you. First of all, I'm not much fluent in English, so can I talk in Urdu? Sure. Is it okay for all of you? Okay. दूसरी रिक्वेस्ट मैम ये है कि चूंकि पहली दफ़ा मैं इस तरह फोरम में मौजूद हूँ और मेरे सारे सीनियर्स यहाँ मौजूद हैं, तो इन केस कि अगर मुझसे कोई कोताही हो जाए तो मैं पेशगी आप सब लोगों से माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात फ्लो में, क्योंकि बिकॉज आई बिलोंग्स टू मिडिल मैनेजमेंट, मैंने सीनियर्स को भी देखना है और मेरे साथ जो जूनियर्स या जो मेरे सबऑर्डिनेट्स या सेंटर्स पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, मेरी उनसे भी मुलाकात रहती है। और जो डे टू डे इश्यूज, जो रियल टाइम ART सेंटर्स पर जो इश्यूज आते हैं, मैम ने अभी बात कर रही थी ART सेंटर और इम्यूनोलॉजी सेंटर की बात कर रही थी, हमारे यहाँ इसे कहा जाता है स्पेशल क्लिनिक्स। तो हमारे स्पेशल क्लिनिक्स पर जो डे टू डे इश्यूज आ रहे होते हैं वो भी मैं देख रहा होता हूँ। सबसे पहले तो जो मैम ने, डॉक्टर फिजा ने जो आइडिया दिया है, दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट आइडियाज, और आई विश के मैं टाइम जोन के जरिए बैक में चला जाऊं और दोबारा से जब मेडिकल कॉलेज में हूं तो मैं इसी तरह किसी तरीके से इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लूं। लेकिन मैम ऑन ग्राउंड, इन ग्राउंड रियलिटीज आर much more complicated as we are expecting here, because in America people are well aware, वो जानते हैं चीज़ों को, लेकिन पाकिस्तान में, और मैं स्पेसिफिकली पंजाब की बात करूंगा, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। थोड़ा सा मैं पहले एक आइडिया दे दूं कि अभी इस वक्त पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट काम करता है, वेयर जितने मेडिकल कॉलेजेस या टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंडर काम करते हैं। यही वो प्रॉब्लम है जो अभी हम नए ART सेंटर्स खोलने जा रहे थे तो हमें बहुत सारी जगहों पर कॉम्प्लिकेशंस आई, प्रॉब्लम्स आई। आप में से शायद कुछ लोग जानते हो कि पहले जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यानी कि 2016 तक हमारे तकरीबन 11 सेंटर्स थे पूरे पंजाब में। टाइम की कमी की वजह से मैं नाम नहीं बता सकता, अगर आप कहें तो मैं बता सकता हूँ कि जो वो 11 सेंटर्स, जिना हॉस्पिटल लाहौर, मेयो हॉस्पिटल लाहौर, सर्विसेज सैयद मिठा, DHQ हॉस्पिटल गुजरात, सरगोदा, रावलपिंडी, रहीम यार खान, DG खान, फैसलाबाद और मुल्तान में थे। सन 2017 में 4 और बने, जिसमें शौकत खानम का एडिशन हुआ। कुंजहा गुजरात एक आउटब्रेक की वजह से हमें वहां पर सेंटर डेवलप करना पड़ा, जो बेसिकली पीडियाट्रिक सेंटर था, पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए था। फिर एक और नया इनिशिएटिव 2017 में लिया गया कि फाउंटेन हाउस के साथ कोलैबोरेशन के साथ हमने स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर्स की स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट के लिए एक सेंटर डेवलप किया, जो फाउंटेन हाउस में अभी भी काम कर रहा है, जहां मैं एडिशनली एज ए मेडिकल ऑफिसर काम करता हूँ। उसके बाद PSCP कॉम्प्लेक्स में भी एक VCCT सेंटर डेवलप किया गया। 2018 में स्ट्रेंथ और बढ़ी, हम 19 सेंटर्स तक पहुंच गए, और हमने जलालपुर जट्टा एक आउटब्रेक की वजह से, शेखुपुरा और कोट मोमिन अगेन एक आउटब्रेक की वजह से, जो एक मिनी आउटब्रेक्स हुए थे यहाँ पर बिकॉज ऑफ क्वैकरी, कहा जाता है कि क्वैकरी की वजह से हुए थे, और चिन्नौट में भी डेवलप हुआ। 2019 में फिर 4 नए सेंटर्स का इजाफा हुआ, मुजफ्फरगढ़, उकाड़ा, झेलम और मियांवाली, और 2020 में 2 सेंटर्स ननकाना और भावलपुर, और अब 2023 में हम इस वक्त पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंस रखते हैं। अच्छा, ये जो प्रेजेंस है, इस सारे 45 सेंटर्स जो अभी करंटली काम कर रहे हैं हमारे, इनमें 12 ऐसे सेंटर्स हैं जो टीचिंग हॉस्पिटल्स के साथ हैं। जब नए सेंटर्स की एक्सटेंशन हुई और मुझे जाना पड़ा, तो आप यकीन करें, जो पहली बात मेरे जहन में जो मुझे कही गई कि MS साहब या DMS साहब या जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, वो मेरा हाथ पकड़ते थे, कहते थे डॉक्टर साहब आ जाएं, आपको जो खाली कमरा मिलता है ना वो ले लें।
اور بلیو بھی مجھے ایک واش روم بھی خالی نہیں ملا, کیونکہ کئی جگہوں پر انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے 2016 سے وہی انفراسٹرکچر ہیلتھ کیئر سسٹم میں چل رہا ہے جو آج تک ہے. اس میں کئی نئی ڈیزیزز کا اضافہ ہوا, اس میں کورونا کا اضافہ ہوا, اس میں ڈینگی وارڈز بنے, اس میں آئسولیشن وارڈز بنے, اس میں اور چیزیں بنی. تو یہ سینیریو رہا. یہ تو ایک سینیریو تھا کہ ہمارا انفراسٹرکچر ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچا کہ ہم آج تک, میرے پاس کئی ایسے سینٹرز ہیں جو ایک روم پر چل رہے ہیں. ایک روم, میں 2 رومز کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ جب ہم ART گائیڈ لائنز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو بھی مریض یا جو بھی سسپیکٹ ہے, بھلے وہ ابھی ڈائگنوز نہیں ہوا, اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کی پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کاؤنسلنگ میں آپ اسے ایک پرائیویسی دیں گے جہاں پر وہ کھل کر آپ سے بات کر سکے اپنے کلینکل سائیکالوجسٹ کے ساتھ. انفارچونیٹلی وی آر اسٹل انیبل ٹو ڈو ایٹ ایون وہ سینٹرز جو پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے انڈر آ رہے ہیں, وہاں پر بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم ایک ورٹیکل پروگرام کے طور پر پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دس از ون آف دا تھنگ. اچھا, اس کے بعد آگے جہاں تک ٹریٹمنٹ کی بات یا HR کی بات کرتے ہیں, HR میں پہلے ہمارے پاس ایک مکس ماڈل چل رہا تھا. مکس ماڈل یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو گلوبل فنڈ یعنی کہ نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام اور اب UNDP کے تھرو ان کی جو سیلریز تھی ہمیں مل رہی تھی, جس میں سے کچھ کلینکل سائیکالوجسٹ اور کچھ ڈیٹا انٹری آپریٹرز تھے. ویئرز ART فزیشین یا وہ فزیشین جو اسپیشل کلینک پر بیٹھنا تھا, وہ فزیشین ہم کبھی پرائمری سیکنڈری سے مستعار لیتے تھے, کبھی کہیں سے آنرری بندہ پکڑ لیتے تھے, کہیں سے ڈائریکٹلی فون کال پر دوسرے سینٹروں کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ اگر پیشنٹ آ جاتا ہے ان کرائٹیریاز کو پورا کر رہا ہے تو آپ جو ہے اسے ٹریٹمنٹ کیسے اسٹارٹ کریں گے. دس واز سیکنڈ چیلنج. اچھا, یہ 2023 میں ہم لوگوں نے پورا کر لیا. اس وقت میں 5 یا 6 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر میرا ڈیڈیکیٹڈ ART فزیشین نہیں بیٹھا ہوا, باقی سب جگہوں پر ART فزیشینز موجود ہیں. اچھا, وہ 5 سے 6 جگہ بھی صرف اس وجہ سے کہ ان ایریاز میں میڈیکل پروفیشنل ڈاکٹرز جانے سے انکار کر رہے تھے. جیسے راجن پور کا علاقہ ہے, وہاں میرے پاس فزیشین نہیں موجود ہے. جیسے رحیمیہ خان کے قریب کچھ جگہیں ہیں, وہاں پر ART فزیشین موجود نہیں ہے. تو دیز آر دا ایریاز کے جہاں امپروومنٹ کی ضرورت تھی. تو میم اب رہی بات میم کہ ہم اس سینیریو میں جب پروگرام پرائمری اینڈ سیکنڈری کیئر کے انڈر ہو اور کالجز یا میڈیکل کالجز اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے انڈر ہو, جن کے سیکٹریز, جن کے اسپیشل سیکٹریز, جن کے ٹیکنیکل ایڈیشنل سیکٹری ٹیکنیکل یا ورٹیکل پروگرام سارے ڈفرینٹ ہو, ہم اسے انٹیگریٹ کیسے کر سکیں گے, یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. اینڈ دس ول بی ریئلی اے گریٹ چیلنج. اب رہی بات میم کہ اگر ایکسیپٹ ہو بھی گیا اور ہم ایز اے پائلٹ کسی جگہ ایک سینٹر ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, جیسے میں اگر سروسز کی بات کروں, تھینکس اے لاٹ ڈاکٹر صوبیہ قاضی نے اسے نو ڈاؤٹ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی میرے جو کریٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر صوبیہ, اسی طرح ایک ڈاکٹر زمان خان صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے, آج کل وہ آسٹریلیا میں ہیں, انہوں نے جنہ میں اڈاپٹ کیا ہوا تھا. ریزن کیا تھا کہ مریض آتا تھا ڈیبلیٹیٹنگ فیز میں آتا تھا, ایڈز کی کمپلیکیشن کے ساتھ آتا تھا, کیونکہ زیادہ تر مریض وہ ہیں جو OPD بیسس پر ہمارے پاس آ رہے ہیں, اسی لیے ہمارے سارے سینٹرز OPD میں بنے ہوئے ہیں. مریض ڈیبلیٹیٹنگ فیز میں آتا تھا تو الٹیمیٹلی ایڈمیشن کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑتی تھی. یہاں میں چاہوں گا کہ اگر آپ سب لوگ مجھے سننا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو کچھ 2 واقعات بتانا چاہ رہا ہوں. پہلی وجہ یہ, پہلا واقعہ ریسنٹلی نیولی جوائن میں تھا, اور ایک پیشنٹ اپنے پیر میں ایبسیس کی وجہ سے, وہ لوکیشن کچھ ایسی تھی کہ اسے انڈر GA انہوں نے ڈرین کرنا تھا. میں نے بڑی ایفرٹ کر کے, میں ہاسپٹل کا نام نہیں لوں گا, میڈیکل آفیسر میرے ساتھ تھا, دوستوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, یار شکر الحمدللہ اب جائے گا مریض, اس کا ایبسیس ڈرین ہوگا, اور آئی واز فیلنگ ویری انتھوزیاسٹک. تھوڑی دیر بعد وہی مریض OT کا گاؤن پہنے ہوئے, ہاتھ میں ڈرپ پکڑی ہوئی, برانڈلا اسے لگا ہوا, وہ واپس آ گیا. کیوں کہ جی وہ سرجن صاحب نے نا دیکھ لیا تھا کہ HIV پازیٹیو ہے, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا, OT بند کرنی پڑے گی 3 دن کے لیے, تو میں تو اسے نہیں کر سکتا. اور ایک اچھی بھلی گھمسان کے رن کے بعد ہمیں اس کا ایبسیس ڈرین کروایا پرائیویٹلی. میں یہ آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں, یہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے اندر اسٹگما موجود ہے. ریسنٹلی پچھلی عید پر, یہ جو ابھی عید گزری ہے, اس سے ایک رات پہلے PPT-CT کے حوالے سے میرا مریض ایک ہاسپٹل میں موجود تھا جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, اور اس ہاسپٹل کے اندر خاتون کا جو, کیونکہ وہ پلانڈ پیشنٹ تھا, PPT-CT سینٹر وہاں موجود تھا, وہاں پر ہمارے PG ٹرینیز موجود تھے. ان کا مجھے مریض کا رات کو کال آئی کہ ڈاکٹر مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی جو بچہ دانی ہے نا وہ بند کر دینی ہے, نکال دینی ہے. اچھا, دس از اگینسٹ دا ول, کیسے کوئی کسی کو وہ کر سکتا ہے. مائی رسپانس واز, جب میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کی تو ڈاکٹر صاحبہ کا رسپانس یہ تھا کہ یہ لوگ نا معاشرے پر برڈن ہوتے ہیں, تو اس لیے ہمیں انسٹرکشنز ہیں
کہ جی آپ نا ان کو ٹی ایل کر دیا کریں تاکہ فیوچر میں جو ہے نا وہ فردر جو ورٹیکل ٹرانسمیشن ہے وہ چانسز نہ ہو سکے. آپ یقین کیجئے میرا رسپانس اس کو یہ تھا کہ آپ ایک کام کریں, ایک بڑی سی گن خرید لیں کہ جہاں آپ کو HIV کا مریض نظر آئے اسے گولی مار دیجیے گا تاکہ یہ برڈن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو دس از ہاؤ دا رسپانس. پہلا برڈن جو اس سارے کام میں ہمیں فیس کرنا پڑے گا وہ ہوگا اسٹگما اور ڈسکریمنیشن ود ان ہیلتھ کیئر کمیونٹیز. میں آپ کو بہت سمپل بات بتا رہا ہوں, ادروائز ہم کچھ بھی کر لیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پرابلم ہے. یقین کیجئے جب میں بتاتا ہوں کہ عید کے دنوں میں میرے گھر پر 15 سے 20 وہ فیملیز آتی ہیں جن میں سے کچھ لوگ پازیٹیو ہیں اور وہ انہی برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں جن میں میرے بچے کھانا کھاتے ہیں, تو بہت سارے لوگ سرپرائزڈ ہوتے ہیں. اور وہ کون سے لوگ سرپرائز ہوتے ہیں؟ جو خود ڈاکٹرز ہیں, اینڈ دے ایڈوائز می کیئر کہ یار عاطف خیال کیا کرو یار عاطف, خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے. تو دس از ہاؤ دا سینیریو. تو میم ماڈل میں خدا نہ خواستہ کو کمی نہیں ہے, لیکن اسے تھوڑا سا فارملائز کرنا پڑے گا ٹو پاکستان کے یا پنجاب کے سینیریو کے مطابق. رہی بات کہ اس سارے سینیریو کو اڈاپشن میں اور کیا پرابلمس آئیں گی. میم سر یہاں موجود ہیں, میں نے ڈاکٹر صاحب کا نام دیکھا, ڈاکٹر فیصل صاحب کا. سر اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ایٹ دا مومنٹ میں ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, میم شروع میں یہ بات ہو چکی ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹس میں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹس میں فائر فائٹنگ کی سچویشن رہتی ہے. کبھی ہم کورونا کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں, سارا اسٹاف وہاں بھاگ رہا ہوتا ہے, کورونا کے علاوہ کوئی بات نہیں سنی جا رہی ہوتی. کبھی ہم ڈینگی کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں, سب لوگ وہاں بھاگ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. ڈینگی کم ہونا شروع ہوا ہے, اب اسموک ہے, اب پورا ڈپارٹمنٹ اسموک کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جی پنجاب میں, کیونکہ یو این ایڈس کے جو آخری 2022 والا جو فگرز میرے پاس آئی تھی اس میں ایڈس ایسٹیمیشن ماڈل کے مطابق پاکستان میں 2 لاکھ اور پنجاب میں 92,000 مریض ہیں, اور ہمارے پاس جو ستمبر تک جو رجسٹرڈ پیشنٹس تھے وہ تقریباً 36,700 کے قریب تھے جو ایور رجسٹرڈ تھے. ان میں سے 31,000 یا 32,000 کے قریب وہ لوگ تھے جو ART جنہوں نے کبھی سٹارٹ کی. اور کرنٹلی جو ہماری اپنی ڈیفینیشن ہے کہ لاسٹ 6 منتھس میں کسی بندے نے ایک دفعہ بھی اگر ART لی ہے, سینٹر پر وزٹ کیا ہے, تو وہ تقریباً 17,600 یا 700 کے قریب مریض ہیں. ایگزیکٹ فگر مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے, 17,500 کے قریب ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کرنٹلی آن ART ہیں. اچھا, جب ڈپارٹمنٹ کے سامنے یا بڑی میٹنگ میں جہاں منسٹرز اور سیکٹریز اور ایڈیشنل سیکٹریز اور سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ جی 17,000 مریض ہیں, تو آپ یقین کیجئے انٹرسٹ لیول شاید 0 کے قریب آ جاتا ہے کہ یار 17,000 مریض ہیں, چلو کچھ نہیں دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے, اوکے چل رہا ہے. تو یہ ایک اگین بڑا ہرڈل ہوگی فار اڈاپٹیشن آف دس ماڈل. آلدو کہ جو ابھی نئے سیکٹری صاحب آئے ہیں, جو نئے ابھی منسٹر صاحب آئے ہیں جو پرائمری سیکنڈری کے حوالے سے ہیں, وہ بڑے کین انٹرسٹ میں ہیں کہ نہیں یار یہ ہونا چاہیے سارا سلسلہ, ٹھیک ہے آپ لوگ کام کریں, آپ ایکٹیویٹی کریں, سارا سلسلہ کریں, لیکن یہ اگین بڑا ہرڈل آئے گا. میم اس کے بعد ایک اور بڑا ہرڈل ہے, آئی ایم سوری مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید زیادہ بول رہا ہوں. چلیں آپ ایک اور پوائنٹ دے دیں, then we'll come back to you. یس میم, یس میم. اگلی بات جو بڑا ہرڈل آئے گا, اگر ہم ٹریٹمنٹ وائز دیکھیں کہ کون سے پیشنٹس ہمارے پاس آن ٹریٹمنٹ ہیں, تو ہمارے پاس تقریباً اگر میں ایگزیکٹ نہیں بھی بتا پا رہا تو اگر 31,000 جو میں نے ایور رجسٹرڈ کہے تھے ان میں سے 16,200 کے قریب ایسے مریض ہیں جو IV ڈرگ یوزرز ہیں, اور وہ ایک اسپیسیفک CBO کی طرف سے ہمارے پاس آئے. اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے میم کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹوٹل جنک میں سے مور دین 50% وہ پیشنٹس ہیں جو IV ڈرگ یوزرز ہیں, اور اگر میں پاکستان کی ریئلٹی میں بات کروں تو یہ وہ IV ڈرگ یوزرز ہیں جو پلوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, جو اندھیری جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو خالی پلاٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاؤ کین وی گو فار دوز SDGs کے جو 95 والا ہے جب پیشنٹ ہی آپ کے پاس نہیں آتا. اور انفارچونیٹلی I don't know کہ یہ پراپر فارم ہے اس کا یہ نہیں, کہ وہ جو CBO یا وہ NGO جو کام کر رہی ہے IDUs کے حوالے سے, وہ کون سی, وہ ہمارے پاس مریض لانا عذاب کر دیتی ہے. آپ یقین کریں کہ اگر 31,000 یا 36,000 پیشنٹ رجسٹرڈ ہے اور 17,000 آپ کا آن ٹریٹمنٹ ہے, تو اس کا مطلب باقی مریض کہاں ہیں؟ 5,000 ڈیتھ نکال دیں تو 9 سے 10,000 مریض وہ ہے جو لاس ٹو فالو اپ پہ, اور وہ سارے کا سارا IV ڈرگ یوزرز ہے. یقین کیجئے میری کھچائی ہوتی ہے اس بات پر, یہ ایک بڑا ایشو ہے میم. اچھا, اب میں پاکستان کے سینیریو میں بات کروں تو پاکستان کے اندر چونکہ پریویلنس ریٹ 0.1% ہے, اور جو باقی پریویلنس ہے وہ کن لوگوں میں ہے, وہ ہائی رسک کمیونٹی ہے, وہ ٹرانسجینڈرز ہیں, سب سے زیادہ IV ڈرگ یوزرز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. دوسرے نمبر پر MSMs ہیں,
तीसरे नंबर पे ट्रांसजेंडर्स हैं, फिर उसके बाद फीमेल सेक्स वर्कर्स की बारी आती है जो हार्डली 2 या 2.5% के करीब जिनमें प्रेवलेंस मौजूद है। तो बाकी अगर ट्रांसजेंडर्स या एमएसएम्स की अगर मैं बात करूं, एमएसएम्स तो उनके साथ काम करना या उन्हें बुलाना ये एक बहुत मुश्किल काम है। पंजाब बेस्ड कंट्रोल प्रोग्राम ने एफर्ट की है, हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम एमओयू साइन करें इनके साथ, हम इन्हें एचआर प्रोवाइड करें, एचआर इस तरह से प्रोवाइड करें कि वो उन्हीं की कम्युनिटी में से लोग लिए जाएं जिनके जरिए हम उनकी स्क्रीनिंग करें ताकि उनको लेकर आए, सेंटर पर लेकर आए। तो मैम इस सारे मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और उसी हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है ताकि हम इसको फ्रूटफुल बना सकें। क्योंकि मैम काम हकीकत बताऊं तो मैं संडे को भी काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ मौजूद लोगों में से शायद डॉक्टर उमैर सबसे बेहतर जानते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से मालूम है कि मैं सैटरडेज संडेज लगे होते हैं कुछ ना कुछ, क्या कुछ एफर्ट कर लें, कुछ नया कर लें, कुछ ऐसा काम कर लें कि जिसकी वजह से जिंदगी बच जाए। मैम जब से मैं आया हूँ अल्लाह जानता है कि मेरे पास सिर्फ एक केस ऐसा है आउट ऑफ 275 केसेस, सिर्फ एक केस ऐसा है जो वर्टिकल ट्रांसमिशन में हुआ है, एंड दैट इज माय ओन एफर्ट। मेरी सजेशन इस सारे सिनेरियो में सिर्फ एक ही होगी कि इस वक्त हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है ब्रिजिंग पॉपुलेशन की वजह से पीपीटी-सीटी के लिए, और हमें डेवलप करने की जरूरत है फोकल पर्संस, सेंटर्स विद इन टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स जो पीपीटी-सीटी के हवाले से देख सकें। क्योंकि मैम इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, खुदा ना खास्ता एक बंदा आईवी ड्रग यूजर्स है या एमएसएम है या बायसेक्सुअल है और उसकी वजह से उसकी फैमिली या उसके मेंबर्स घर वालों में से कोई एक मुतासिर होता है, और वो डायग्नोज कब होता है मैम? डायग्नोज होता है जब वो फुल टर्म लेबर पर मौजूद होता है, वो लेबर पेन के साथ आ रहा होता है, वहां उसका बीसी और एचआईवी अगर कोई कर ले तो पता लगता है, और लास्ट मोमेंट पे वो भाग दौड़ लगती है कि वो खातून बेचारी जो है वहां नई हाउस ऑफिसर्स या एमओस बैठी होती हैं, वो एचआईवी का नाम सुनती हाथ उठा लेती है, तो वो मरीज जलील हो रहा होता है। यही वजह है कि हम रातों को जा जाकर टर्शरी केयर में बुला रहे होते हैं, खुद से पैसे डालकर उन्हें मंगवा रहे होते हैं एम्बुलेंसेज में कि यार इनको सर्विसेज ले आओ, इसको फैसलाबाद अलाइड में ले आओ, इसको डीजी खान में ले आओ, क्योंकि एट द मोमेंट मेरे 3 सेंटर्स काम कर रहे हैं, डीजी खान, फैसलाबाद और सर्विसेज वाला, और इसके अलावा एक वो सरगोदा वाला ऑफ एंड ऑन चल रहा होता है, सिलसिले हो रहे होते हैं। मैम मुझे पूरा इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि लास्ट मोमेंट्स में मैं मरीज ट्रांसफर कर रहा होता हूँ। इस वक्त हाईली रिकमेंडेड ऑनेस्टली ये होगा कि हम इसमें पीपीटी-सीटी की इंटरवेंशन डालें, उन्हें ट्रेन करें किसी तरीके से और वहां फोकल पर्संस डेवलप करें जो सिर्फ टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में होंगे तो बहुत अच्छा होगा। नो डाउट कि हमारे जो डीएचक्यू हॉस्पिटल्स हैं वो भी अब इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वहां चीजें मैनेज की जा सकती हैं, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि अच्छा यार ये ओटी साफ करने का तरीका तो बता दो यार, तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ यार जो तुम हेपेटाइटिस सी के लिए करते हो वही इसके लिए कर रहे हो। तो फिर कई दफा क्या होता है कि वो लास्ट पे रखते हैं, लिस्ट में सबसे आखिर में रखते हैं मरीज को, और सबसे आखिर में रखने की वजह से वो हर दफा अगले दिन पे चला जाता है, और किसी ना किसी तरह। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने अर्ज की मैम कि जब से मैं आया हूँ सिर्फ एक बच्चा मेरे नॉलेज में होते हुए एक बच्चा सिर्फ वर्टिकली ट्रांसमिट हुआ, अदरवाइज ट्रांसमिट नहीं हुआ। इस वक्त करंटली बच्चे जो है तकरीबन 700 के करीब बच्चे। आई एम सॉरी मैम मैं ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन चलिए फिर मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट रोकूंगी क्योंकि हमारे पास और पैनलिस्ट्स भी हैं, बट थैंक यू डॉक्टर आतिफ ने बहुत ही पेनफुल रियलिटीज को हाईलाइट किया है। हमारा जो ये आइडिया है वी बेसिकली वांट टू स्टार्ट जहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी बहुत अवेयरनेस है और थोड़ी सी स्टिग्मा कम है, तो वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम, एंड वी विल डेफिनेटली नीड योर हेल्प टू आइडेंटिफाई कि किन एरियाज में हम ये कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। पर आपने बहुत अच्छे लॉजिस्टिक्स पॉइंट आउट किए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, एंड प्लीज स्टे ऑन फॉर सम क्वेश्चंस। आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू Dr. Muhammad Idris. He is a pediatric consultant in Hyderabad in NWFP, which is KPK. He is actually he's a pediatric HIV focal person. So Dr. Idris, please join, and we would love to hear what you have to say. Is Dr. Idris here? So Saima, can you please let everyone know what is the line? अस्सलाम वालेकुम मैडम। आ गए हैं? जी जी मैडम वो अनम्यूट था। हाँ जी 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 अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। डॉक्टर आतिफ ने काफी रुलाया है, तो
ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, ये सिर्फ नंबर डिफरेंस हो सकते हैं, वहां पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, इस तरह से ये है, सबके साथ ही ऐसा है। लेकिन ये फॉर्म इन चीज़ों का तो नहीं है। खैर, यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को किस तरह एंगेज करें। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि हमें क्या रिजल्ट्स मिले जब हमने ऐसे किया। हमने क्या किया कि जो मेडिकल की जो एफसीपीएस के पार्ट 1 के जो ट्रेनिंग्स थे, हमने मेडिकल वालों से रिक्वेस्ट की, गायनी वालों से, कि आपके जितने भी ट्रेनिंग्स हैं कम से कम उनको 2 हफ्तों के हमारे पास भेजें उनको, ताकि उनको सिर्फ ये आइडिया हो जाए कि ये जो सेंटर है ये ओपीडी बेस का सेंटर है। ये कोई ऐसा सेंटर नहीं है कि रात को भी पेशेंट आया और आप कॉलें कर रहे हैं कि HIV सेंटर चले जाओ, वहां पे क्या क्या होता है उनको कुछ पता ही नहीं होता बेचारों को। ये हमारा काम है कि उनको बताएं। उन बेचारे वो क्यों आएंगे, उनको क्या इंटरेस्ट है। अच्छा, इससे क्या हुआ, बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया। जो उन लड़कों को पता नहीं था, जिनकी रोटेशन नहीं हुई थी, वो किस तरह की कॉल करते थे। कॉल आती थी, सर पेशेंट आया, सर में दर्द है, ARVs ले रहा है, मैं क्या करूं इसके साथ। अल्लाह के बंदे, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, जैसे आप दूसरों को डील करते हैं वैसे ही डील करें। हमारे पास इसको मंडे को भिजवा दें, आज तो इतवार है, छुट्टी है। अच्छा, एक दूसरा लड़का है जिसने बाकायदा वहां पे रोटेशन की हुई है, वहां पे वो वही कॉल करता है, अच्छा सर मैंने पेशेंट डील कर दिया, उसको बस हेडेक था, वो एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है, वो मैंने डोज करेक्ट कर दी, ARV उसकी ठीक थी, मैंने सुखा कि अपनी डेट पे आराम से अपने विजिट के लिए आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे फायदा किसको हुआ, पेशेंट को हुआ। कैसे हुआ, उस बेचारे को बिल्कुल भी किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, वो बहुत खुश होकर घर चला गया। अच्छा, दूसरा पेशेंट था जिस डॉक्टर ने रोटेशन नहीं की थी, रोटेशन डॉक्टर ने नहीं की, पेन कौन ले रहा है, पेशेंट। कैसे ले रहा है, वो बेचारा 8 बजे ART के सेंटर घूम रहा है कि यहाँ पे कौन मुझे मिलेगा जो मुझे देख लेगा। अब अच्छा, इसके अलावा जो भी कोई आसपास से गुजर रहा है जिसको ART सेंटर का कोई आइडिया नहीं है, जिस डॉक्टर ने रोटेशन नहीं की, तो वो बेचारे क्या करेगा, हाँ यार ये तो लोग सुबह आएंगे, आप रात कहीं गुजार लो, तो ये तो अब सुबह ही आएंगे। अब यही डॉक्टर अगर उसको रोटेशन हुई होती, उसको पता था कि यहाँ पे सिर्फ OPD बेस पे प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी ART की जो होंगी, बाकी तो आप मेडिकल डॉक्टर के पास चले जाएं, उसकी वो कर लें। इस तरह की कई पेशेंट ने रात बरामदे में गुजारी है, रात सड़क पे गुजारी है। अगर वही पेशेंट रोटेशन की होती उसने, तो वो बंदा उसको आराम से डील कर सकता था। अब हमारे पास प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, ये तो इतना सिनेरियो चेंज हो गया कि वो पेशेंट थैंक यू करके डॉक्टर के पास गया है, उसी मेडिकल इमरजेंसी में, कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी सर दर्द की बता दी, बाकी तो मैं आराम से अपनी डेट पे उनके पास चला जाऊंगा। अच्छा, अब हमारे पास जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, अब हमारे पास अटैच हैं, KGMC है, हमारे पास खैबर मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास अब मैं तो पेडियाट्रिक वार्ड को भी संभालता हूँ। अब हमारे पास पूरे साल की इनकी रोटेशन आ जाती है कि इतने मंथ की इस वार्ड में है, इतनी मंथ की इस वार्ड में, इतनी मंथ की इस वार्ड में है। अगर हम उनके साथ, डॉक्टर बुशरा ने बहुत जबरदस्त किस्म की बातें की हैं, ये हमारा ये हकीकत है, तलख है, जो भी है, मीडिया खड़वा है, जो भी है, ये हकीकत है। हमारे कंसल्टेंट्स, हमारा सिस्टम ऐसा है कि एक दूसरे को हम सुनना थोड़ा बर्दाश्त नहीं करते जब तक हमारे पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। ये हकीकत है, बाकी जो भी हैं जिस तरह भी हैं, और ये है, इसी सिस्टम में हमने चलना है। जिस तरह हमने TMO की रोटेशन लगाई है, वो भी मुश्किल काम था, वो कोई आसान काम तो नहीं था कि आप कंसल्टेंट्स के पास जाए, अपने TMOs के भिजवाएं बगैर पैसों के, कोई इंसेंटिव नहीं। हाँ, उनको हम सर्टिफिकेट जरूर देंगे कि इसने ART सेंटर में काम किया हुआ 2 हफ्ते का, कहीं भी जिंदगी में उसको यूज कर सकता है। और सर्टिफिकेट से इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी अपनी जिंदगी लड़ाई झगड़े से बच गई, वो किसी भी उसके HIV पेशेंट को, एड्स के पेशेंट को वो डील कर सकते हैं, अभी उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि दूसरे डॉक्टरों के, अगर मैंने तो नहीं देखना क्योंकि ये तो HIV का पेशेंट है, तो लड़ाई तो बन गई, लड़ाई तो होगी, जरूर होगी। वो कहेगा क्यों नहीं देखेंगे आप मुझे, आप तो डॉक्टर हैं, तो उसकी जिंदगी अमन के साथ गुजरेगी, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, अभी अगर हम इन्हीं कंसल्टेंट के पास बैठे, स्पेशली डीन के साथ, उसके साथ हमारे अच्छे टर्म्स हैं, डीन्स को हम कन्विंस करें कि सिर्फ फाइनल ईयर में के बच्चे जो कि दूसरे वार्ड में रोटेशन किया जाते हैं, सिर्फ 2 वीक की रोटेशन अगर आप यहाँ पे लगा दें, इससे फायदा क्या होगा, यही बच्चे और बच्चियां हाउस जॉब में आएंगी। फिर हाउस जॉब वाले 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, किसी भी टाइम पेशेंट आ गया, उनको आइडिया होगा कि ART सेंटर तो बंद होता है 2 बजे। अच्छा, इनके साथ तो दूसरी प्रॉब्लम हो गई, हमें तो बताया था कि ये तो दूसरी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसी के मुताबिक डील करना है। स्किन का इशू है, कोई मेडिसिन वैसे जैसे स्किन के लिए होती है, इसके लिए भी लिख दो, इसमें क्या कोई खास बात तो नहीं है, रात 12 बजे तो ART सेंटर के चक्कर क्यों कटवाएं इनको। अच्छा,
डिलीवरी का केस आ गया, ठीक है, ART ले रही है, हमें तो अंदाजा है, मेडिसिन आप ले रहे हो, इस तरह ये चीजें हैं, बस ART सेंटर का काम खत्म। ये तो सिंपल लेबर रूम का मसला है। अच्छा, लेबर रूम हमने तो वहाँ पे देखा था, रूटीन में पेशेंट आते रहे, चेकअप होता रहा, कोई इशू तो नहीं होता इस चीज का, तो वहां पे भी कर लेंगे। तो उनको कम से कम बेचारों को सिर्फ अंदाजा हो जाए कि इस तरह के पेशेंट प्रैक्टिकली उन्होंने कभी देखे नहीं होते, उनके लिए तो कोई पता नहीं अजीब सी मखलूक होती है। 2 हफ्तों में उनको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या डिजीज है, और उसके लोग तो यही हैं, 2 हाथ और 2 पैरों वाले लोग ही हैं, कोई खास मखलूक तो नहीं है ये तो इसलिए बेचारे वो परेशान होते हैं, उनको इसलिए वो नहीं ट्रीट कर सकते कि उन्होंने कभी देखा ही ना हो। तो जब वो देखेंगे, उनको प्रैक्टिकली उनसे हाथ मिलाएंगे, देखेंगे, तभी जाके उनकी समझ आएगा, अच्छा ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो सिंपल आम ह्यूमन बीइंग है, और ये तो ART है, और ये जो भी उसका प्रॉब्लम होगा नॉर्मल एंटी हाइपरटेंसिव है, यही वाले एंटी डायबिटिक, यही चीजें हैं सारी। एप्सिस ड्रेन है तो वही जैसे रूटीन में करते हैं इसी तरह करना है। वरना इसी एप्सिस ड्रेन के लिए 2 बजे हमारे पास कॉल आई है कि आपका पेशेंट आया, आपका पेशेंट आया है, और आप खुद ही उसको ड्रेन करें, क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं था कि ART क्या चीज है, HIV क्या चीज है, एड्स क्या चीज है। तो जिन बच्चों को पता होता है वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। तो मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिकली बहुत ही सॉलिड स्टेप होगा, इससे हमारे भी प्रॉब्लम होंगे सॉल्व हो जाएंगे, और पेशेंट को बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा, सबका एक्सपोजर हो जाएगा। क्योंकि कहाँ से आएंगे ये डॉक्टर, सारे मेडिकल कॉलेज से आएंगे, और तो कहीं से नहीं आते। ठीक है, तो जब 2 वीक की हमारे पास जबरदस्त, जैसे मैडम ने क्लिनिक दिखाया, आप उनका अपने सेटअप में, हमारे जो है ना, हमारे सेटअप में सबसे अच्छा सेटअप है, बहुत बेहतरीन है। हमारे पास हैदराबाद मेडिकल सेंटर में, हमारे पास लेडी रीडिंग में है, वहां पे अगर 2 हफ्तों की रोटेशन करेंगे तो सब के सब को हम एक्सपोजर दे सकते हैं। मैं तो इसको बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करूंगा इसको। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इदरीस, ये तो हमें बहुत खुशी हुई है सुन के कि ये तो आपने ऑलरेडी स्टेप इम्प्लीमेंट किया है, और आपने उसके जो फ्रूट्स हैं, जो फल है उसका, वो भी आपको नजर आ रहा है। तो आई थिंक हम आपसे भी थोड़ी टिप्स लेंगे कि हाउ डिड यू ओवरकम द बैरियर्स, ये जो डॉक्टर आतिफ ने मेंशन किए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का। तो इट साउंड्स लाइक सम लेवल अंडरग्रेड या पोस्ट ग्रेजुएट, दोनों लेवल्स पे अप्रोच करना बहुत जरूरी है, एंड इट हैज बीन डन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इदरीस। आई विल टेक आवर नेक्स्ट कमेंट फ्रॉम डॉक्टर खुदादाद खान. He is the ART physician and in charge HIV/AIDS care in BMC Hospital in Quetta, and he has been with us as well from the beginning. Ji, Dr. Khudadad. अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है क्लियर जी? जी जी। डॉक्टर फिजा, डॉक्टर साइमा, थैंक यू वेरी मच, और तमाम पार्टिसिपेंट्स, और बड़ी खुशी हुई डॉक्टर इदरीस के साथ कई सालों बाद किसी फोरम पे हम फेस टू फेस एक दूसरे को सुन रहे, कई साल। डॉक्टर आतिफ को गालिबन मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। तो डॉक्टर फिजा की जो प्रेजेंटेशन थी, ये यूँ समझे कि एक हमारी दिल की आवाज़ है। जो आप दोनों ने कॉम्प्रिहेंसिव एक पैकेज दिया है, और आर्ट सेंटर्स के लिए एक आइडियल प्रेजेंटेशन है, और उसमें बहुत सारे वेन्यूज जा रहे हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। और डॉक्टर इदरीस ने, उससे पहले डॉक्टर आतिफ ने जितनी बातें की, यकीन जाने 100% मैं इन दोनों को इंडोर्स कर रहा हूँ। बल्कि मैं जिस तरह एग्रेसिवली पहले हर फोरम में बोला करता हूँ, और ये फोरम अपना मेरिट गालिबन ऐसा है कि हम फ्रीली इस पे बात कर सकते हैं कई चीज़ों पे, जो हम मुख्तलिफ और फोरम्स पे इतनी क्लियर बातें नहीं कर सकते। तो डॉक्टर आतिफ के जो इश्यूज उन्होंने रेस किए, उनको एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, डॉक्टर इदरीस ने 100% ये दुरुस्त है। और 2005 से अब तक हम आ रहे हैं, बहुत कुछ हमने इम्प्रूव किया है, लेकिन स्टिल ये चीज़ें, PPTCT का इशू और सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ HIV केसेस स्टिल अ बिग इशू, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन। और मैं स्टार्ट लूँगा और इसी पे फोकस रहूँगा, मेडिकल स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट। और मैं अपने सिनारियो में ये बात करूँगा कि बलूचिस्तान में हम चंद
दूसरे डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे जो नए सेंटर्स बना रहे हैं उसके लिए जो मैंने अपना अपने जहन में प्लान रखा है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर फिजा और डॉक्टर साइमा और अदर फोरम के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि जब तक ऊपर लेवल पे जो इस टाइम यूएनडीपी है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, प्रोविंशियल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स है, जब तक ट्रीटमेंट साइट को वो सीरियस नहीं लेंगे, वो अपनी किसी भी मीटिंग्स में मैंडेटरी इनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जो 99% डायरेक्टली पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन में उनके प्रॉब्लम्स जानते हैं, जैसे डॉक्टर आतिफ साहब ने कहा, डॉक्टर इदरीस साहब को पता है, मुझे पता है। हम जब भी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जी कहीं कोई मीटिंग हुई है और हम थोड़ा सा वो डिसअपॉइंट होके कमेंट दे देते हैं कि व्हाई नॉट टू पार्टिसिपेट, वी हैव टू पार्टिसिपेट इन these मीटिंग्स। तो हमें कहा जाता है कि जी आप के लिए कोई इस पे एजेंडा नहीं था। तो ये एक अलमिया है। जब हम ये चीज़ें जो हम अब जो इस प्रेजेंटेशन में जो चीज़ें आई हैं वो हम जब आगे लेके जाएंगे तो हमें ऊपर की बड़ी हेल्प चाहिए होगी। और जहाँ तक पीपीटीसीटी और ये सर्जिकल साइट की बात है, तो इन लोगों को जो इस साइट पे हैं, जो सर्जन्स हैं और जिनको हम ये पेशेंट रेफर करते हैं, वो डे फर्स्ट उनके जहन में कुछ चीज़ें हैं जो जेन्युइन हैं। ये मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जेन्युइन है, ऑफ द रिकॉर्ड उसे चेक किया जा सकता है। HIV एड्स का जब भी शुरू से नाम आया है, इसमें प्रिवेंशन साइट शुरू से चली आ रही है। 2005 से ट्रीटमेंट कंपोनेंट आया, तो इसमें जितनी भी फंडिंग्स थी तो वो NGOs के थ्रू प्रिवेंशन साइट पे ये फंडिंग्स जाती थी। और जब 2005 से जब HIV ट्रीटमेंट साइट बनी और तब से अब तक हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेटेड एपिडेमिक का लफ्ज यूज होता है और वो बिल्कुल दुरुस्त है, कंसंट्रेटेड एपिडेमिक। और उसे एड्यूज में हमने देखा। और उस पे जितने भी NGOs, जितनी भी फंडिंग और जितने भी प्रोग्राम लेवल पे पॉलिसी मेकिंग हुई, वो उन पे बाद में ट्रांसजेंडर्स पे, MSM पे और कुछ जगहों पे गालिबन फीमेल सेक्स वर्कर्स, जो भी सर्विस डिलीवरी पैकेज बने इनकी पॉपुलेशन में, रिस्की ग्रुप्स में। तो मैं देखता हूँ डॉक्टर उमैर बैठा है, डॉक्टर बुशरा बैठी है, उनको पता होगा कि हमारे ऊपर की फंडिंग का कितना हिस्सा उस साइड पे जा रहा है, की पॉपुलेशन, रिस्की पॉपुलेशन, जहाँ कंसंट्रेटेड एकेडमिक। और आप जब ट्रीटमेंट साइट्स पे देखते हैं तो आपकी फंडिंग कितने % यहाँ आई है। जैसे डॉक्टर आतिफ ने कहा, कहीं एक कमरा है, कहीं वो भी नहीं है, कहीं डेडिकेटेड डॉक्टर स्टाफ है, कहीं नहीं है। डॉक्टर फिजा की जो प्रेजेंटेशन से कंपोनेंट मैं इसमें ऐड करूंगा क्योंकि टाइम कम है। उन्होंने अपने जो स्टाफ का वो बताया, तो वो काफ़ी ज़्यादा 6 फिजिशियंस एक टाइम में वो OPD कर रहे होते हैं उस इम्यूनोलॉजी सेंटर में। और उसके अलावा उनमें काउंसलर, दूसरे सपोर्टर, तो बड़ा एक वो है। और वही मैं इनसे डिटेल में डॉक्टर फिजा से आपसे पूछूंगा कि वो जो सोशल सर्विसेज और फाइनेंशियल और फूड और वो भी आपके अंडर वन अम्ब्रेला ही वो काम हो रहा हो। और मैंने जब से ये देखा है, स्मॉल ग्रांट के थ्रू 6 मंथ्स के लिए भी कुछ चीज़ें कई साल पहले, 10-12 साल पहले स्मॉल ग्रांट्स आई कि जी बाहर के पेशेंट आएंगे तो यहाँ हम उनके लिए बंगला खरीदेंगे, रेंट पे उनको खाना खिलाएंगे, रहेंगे, अगले दिन जाएंगे। उस पे 6 मंथ की स्मॉल ग्रांट्स पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके यूजलेस थे। उसके बाद COPC साइट्स और कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज के लिए और पेशेंट्स को कुछ फूड सप्लीमेंट्स देने के लिए, कुछ और तरह की सर्विसेज देने के लिए जो रिसोर्सेज एलोकेट किए गए, वो मैं बिल्कुल रफली कह रहा हूँ कि उनका मेरे ख्याल में 70-80% वो रिसोर्सेज उस स्टाफ पे खर्च हुए, मैनेजर से लेके तो नीचे ड्राइवर और फील्ड वर्कर तक। और 20% मेरे ख्याल में उनके रिसोर्सेज, उनको सपोर्ट के खर्च आएंगे PLHIV से।
تو دیکھیں اس پہ ہم اگر انڈر ون امبریلا کرتے, ہمارے ہی سینٹرز پہ وہ ریسورسز ہوتے, وہاں پہ وہ اسٹاف ڈائریکٹ سینٹرز پہ ریکروٹ کرتے, تو وہ ہمارے لیے, جیسے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ سوشل موبلائزر ہو, کاؤنسلر ہو, اور دوسرا ان پیئر گروپس پہ یا انہی سے ہم لیں جن پہ ہمیں زیادہ خرچہ نہ کرنا پڑے. تو وہ اگر گلوبل فنڈ وہ این جی اوز کو ہائر کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کو انفراسٹرکچر وہ لے رہا ہے, موبائل یونٹس لے رہے ہیں, اور پرچیزنگ ہو رہی ہے مختلف آئٹمس کی, اور جو پیشنٹ کو مل رہا ہے وہ 20% خرچ ہو رہا ہے, 80% وہ پروگرامیٹک لیول پہ خرچ ہو رہا ہے, تو وہ یوز لیس گئی چیز ہے. ڈاکٹر خداداد جی جو ریسورس ایلوکیشن اور فنڈنگ ایشوز ہیں نا, ہاں, وہ آپ کے اور میرے کنٹرول میں تو نہیں ہے. آپ تو مقصد ہے جب جب میں کہنے کا میڈیکل جب میں ابھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ریسورس ایلوکیشن کی بات آتی ہے, تو یہی جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ کے پاس بڑے فنڈز ہیں, تو وائی ناٹ ٹو hire separate dedicated surgeons and gynecologists and separate setup and OTs. تو میں اس پہ بات کر رہا ہوں, تو کبھی بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. اور سیم اب میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں گا, چونکہ ہم ٹرشری کیئر میں 2005 سے سٹارٹ ہم نے لیا, تو ہمارے پاس پیشنٹ آنا, پیشنٹ کی ریفرل ایک ایشو تھا. تو میں نے اسی کو میں جوڑ رہا ہوں کہ جہاں ریسورسز یوٹیلائز ہوئے, جہاں انجیکٹنگ ڈرگ یوزر رائٹ یوزرز پہ کام تھا, جہاں کنسنٹریٹڈ ایپیڈیمک تھی, یہ سوچ تھی کہ انہی سے پیشنٹ زیادہ آئیں گے سینٹر, کیونکہ بہت زیادہ پیشنٹ ہیں اور بڑے ایک کنسنٹریٹڈ جگہوں پہ ہیں. تو دیکھنے میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے سینئر فیکلٹیز میں کام کیا, انفارمل طریقے سے ان کو نالج شیئرنگ کی اور اپنے ڈیٹا شیئر کی. یہ میں 2005 کی بات کر رہا ہوں. جیسے ہم میڈیکل اسٹوڈنٹ سے اب اسٹارٹ لینا چاہ رہے ہیں, یا پی جیز سے, جیسے ڈاکٹر ادریس نے کہا, اور میں نے بھی ایک جگہ آپ سے بات کی تھی کہ ہم چاہ رہے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹ کی بجائے پی جیز کو ایف سی پی ایس پارٹ 1 کے پوسٹ گریجویٹس پہ بات کریں, جیسے ڈاکٹر ادریس بھی کہہ رہے ہیں. وہی بات میں نے بھی آپ سے ڈسکس ہوئی تھی. لیکن اب میڈیکل اسٹوڈنٹس اور ان میڈیکل کالج سے اسٹارٹ لیں گے, اور ہم نے انیشیٹ کیا ہے کمیونٹی میڈیسن ڈپارٹمنٹ, اور ڈاکٹر افضل ہمارے مینیجر ہیں نہیں, ورنہ انہوں نے وہ ڈاکومنٹیشن کا ذمہ لیا تھا کہ وہ لیٹر لکھیں گے پرنسپل کو, اور وہیں سے وہ کمیونٹی میڈیسن کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے انٹرسٹ شو کیا تھا, اور ہم جا رہے ہیں آگے اس کو اپنے طریقے سے امپلیمنٹ کرنے میں, اور اس کی ہمیں ہیلپ چاہیے ہوگی آپ دونوں کی, اور جو آگے وہ تو ہم کر رہے ہیں. تو میں اپنا بتا رہا ہوں کہ یہ جو میرے پیشنٹ ہیں اب تک رجسٹر ہوئے ہیں کوئی 2000 کے قریب, تو اس میں جتنے بھی پیشنٹ آئے ہیں وہ, جیسے اب ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس پی جیز کی اویئرنیس کریں گے, اسی طرح ہم نے انیشیل سٹیج پہ ان پروفیسرز کی یہ اویئرنیس کی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم گئے, ان کے ساتھ میٹنگز کی, ان کے ساتھ کوریڈور میں ایون کھڑے ہو کے ڈسکس کیا, اپنے سینٹر بلایا, اور ان کو اس طرح سینسٹائز کیا کہ آپ کی طرف سے پیشنٹ ہمیں آ رہے ہیں ایچ آئی وی کے, اور ہر ڈسٹرکٹ سے آ رہے ہیں, اور ہر اسپیشلٹی سے آپ کے آ رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوا کہ ہمارے جو, چونکہ کوئٹہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل بھی یہیں پہ ہیں, اور کوئٹہ آپ کا کیپٹل ہے, اور افغانستان سے بھی جو انٹریز ہیں اور ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ وہ ساری کوئٹہ میں آتی ہیں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے لیے. تو یہاں کے ہم نے جتنے بھی سینئر فزیشین, سرجنز اور تمام اسپیشلٹی کے, ان کو سینسٹائز کیا ایک طرح سے. تو اس کا بینیفٹ یہ ملا کہ اب جو ہمارا ڈیٹا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریفرل کہاں سے ہیں, تو 70% ہمارے کیسز ہمارے یہ میڈیکل کالج کی جو فیکلٹی ہے جو پرائیویٹ پریکٹس میں ہے یا ٹیچنگ ہاسپٹل میں, ہمیں پیشنٹ وہاں سے ملے. اور ہم سمجھتے ہیں اسی اویئرنیس, سینسٹائزیشن اور ڈسکشن کا نتیجہ ہے کہ وہاں سے ان کو اورینٹیشن ہوئی کہ ہمیں ایچ آئی وی پیشنٹس مس نہیں کرنے, اور کون سے کی پاپولیشن رسکی گروپس ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے اور وہاں سے پیشنٹ پک کرنے ہیں. اوکے ڈاکٹر خداداد, I'm so sorry, I'm going to انشاءاللہ یہ بہت آگے شکریہ جی,
इंशाल्लाह ये मेडिकल कॉलेज का विद इन अ वीक और 2 हम आपको फीडबैक देंगे और हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट ले लेंगे. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुदादा. Then we will wait for that report. Thank you very much. इंशाल्लाह Thank you. इंशाल्लाह. See, I'm going to go to Dr. Malik Umair. He is our head of the HIV treatment specialist, SR unit of the Global Fund. Ji, Dr. Umair, I'm sure you're full of comments. Go ahead. जी, thank you much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो ये कि I really enjoyed the discussion. मेरा ख्याल है कि अभी तक अपना की जो प्रेजेंटेशन थी हमारी स्लाइड वाला फॉर्मेट, उसके मामले में आज का एक्सपीरियंस ज्यादा हेल्दी, ज्यादा यूजफुल, फ्रूटफुल रहा. खासतौर पे डॉक्टर खुदादाद, डॉक्टर आतिफ, डॉक्टर इदरीस की शमूलियत से ना मैंने कम से कम आज का सेशन ज्यादा मौसर पाया. मैंने जो आपने सवालात भेजे थे उनके आगे कुछ थोड़ा सा काम किया था, लेकिन उससे पहले मैं पूरी मीटिंग के दौरान कुछ ना कुछ नोट्स लेता रहा, जिसमें मेरी जो गुजारिश ये थी कि जो आइडिया है ना मेडिकल कॉलेज का, जो खास तौर पे मैडम फिजा ने बताया ब्राउन में जो स्ट्रक्चर है, उसमें मैं देख रहा तकरीबन 2000 पेशेंट्स के लिए 19 जमा 5 24 फिजिशियंस, जबकि एक्सेप्ट पंजाब पाकिस्तान के ट्रीटमेंट के जितने सेंटर्स हैं उनमें डेडिकेटेड फिजिशियंस बहुत कम है. डॉक्टर खुदादाद क्यों नुमाया है कि डॉक्टर खुदादाद शुरू से हैं, डॉक्टर नाइला पिंक में शुरू से. अदरवाइज हम ट्रेन करते हैं 3-4 महीने के बाद वो डर्मा में, रेडियोलॉजी में, गायनी में हमारे डॉक्टर्स शिफ्ट होते हैं. तो जो पंजाब का मॉडल है कि डेडिकेटेड फिजिशियंस हों, ताकि उन पर हम ट्रेन करें, उनको इन्वेस्ट करें ताकि वो लॉन्ग टर्म रह सकें, और फिर उनको हम मेडिकल कॉलेज से लिंक करें. जो आइडिया है मेडिकल कॉलेज का, इस पर मैं बात करता हूँ. उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एट द लेवल ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स भी. जैसे हमने डर्मा नहीं की, लेकिन डर्मा का हमने वार्ड लगाया, सेक्रेटरी नहीं की, सेक्रेटरी का वार्ड लगाया, गायनी नहीं की. इसी तरीके से आईडी को, और जो डॉक्टर मैडम फिजा ने कहा, डॉक्टर बुशरा ने कहा कि हमें बिल्कुल इसको ART क्लिनिक और HIV क्लिनिक से ऊपर जाके हमें इसे ID क्लिनिक्स बनाना चाहिए. बिकॉज मेरे पेशेंट को TB भी है, मेरे पेशेंट को हेपेटाइटिस भी है. तो हम इसको अगर स्टिग्मा को रिड्यूस करना चाहते हैं तो इस डिजाइन के फॉल्ट को दूर करना होगा. हमें इसकी एडवोकेसी करनी होगी कि हमें इसे ID क्लिनिक बनाना है. बिकॉज मेरे पेशेंट को राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे TB का खतरा है. उसको मैं या तो IPT दूं, INH दूं, या ATT दूं, या कुछ दूं. मुझे उसको TB को रूल आउट करना है. तो इट इज नॉट स्टैंड अलोन डिजीज नहीं है, इट इज अ सिंड्रोम. फंगस भी इसको है. तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है कि हम एडवोकेसी करें हर लेवल पे, स्पेशली गवर्नमेंट भी और जनवा भी, कि इसको हम ART की जगह ID क्लिनिक बनाएं. जबकि CMU का स्ट्रक्चर इस्लामाबाद में मौजूद है, और CDC का सिंध में भी है, और AJK में भी है, और KPK में भी है. कुछ गुजारिश और भी थी मेरी कि जो डॉक्टर ईशानी ने बात की उस पर मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशन थी. उनका एक्सपीरियंस सिंध में अच्छा होगा रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेज. जब प्रोग्राम काम करते हैं, मैंने चूंकि प्री CMU भी देखा है और मैं अब CMU के साथ 2018 से देख रहा हूँ. मुझे जब ये इंटीग्रेशन हो रही थी उस वक्त भी मेरा कंसर्न था, और मैंने ग्लोबल फंड से इसको रेज किया था कि TB का केस लोड 5 लाख प्लस है, मेरे एनुअल इन्फेक्शन 20,000 हैं. तो देयर इज नो मैच बिटवीन द टू डिजीजेस. मेरा डिजीज स्पेसिफिक है, की पॉपुलेशन में ट्रांसजेंडर्स हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, IDUs हैं, और इनकी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन हैं. तो जब मेरा प्रोक्यूरमेंट वाला या मेरा कोई भी एडमिन का अंदाज जब TB के पेशेंट्स देखता है तो देखता है नंबर ज्यादा है. तो पूरा का पूरा CMU इज टोटली डाइवर्टेड, फोकस्ड है, डोमिनेटेड बाय TB, और HIV ऑलरेडी मार्जिनलाइज था, और CMU बनने के बाद हम बिल्कुल डाइल्यूट हो गए. एटलीस्ट फेडरल लेवल पे हम देख रहे हैं इसको कि जो हमारा उठान थी, हमारी मोमेंटम थी 2017 तक, वो बिल्कुल 2018 CMU के बाद हम बिल्कुल रिवर्स में चले गए. मेरा ख्याल है कि हमें बोथ एट द गवर्नमेंट लेवल भी और ग्लोबल फंड लेवल भी इसकी एडवोकेसी करनी है कि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ डिजीज HIV को इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड लोग चाहिए जो HIV को समझते हों. HIV इज नॉट एन ऑर्डर, इट इज एन लाइफ. इसकी अपनी एक, बिकॉज द की पॉपुलेशन को समझना, ट्रांसजेंडर्स को, IDUs की और सेक्स वर्क की डायनामिक्स को समझना. एक तो मेरी ये मेरा डिफरेंस ओपिनियन था सिंध के साथ, जिसमें मैंने देखा प्रोग्राम मुतासिर हो रहा है. दूसरा, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर भी, वार्ड्स के अंदर भी, और जो डॉक्टर इदरीस ने बताया वेरी यूजफुल, कि हमें अपने अस्पताल के अंदर, मैं जो पिम्स में 2 महीने के लिए डिप्लॉय हुआ था लास्ट ईयर, तो 7 वाली वार्ड डर्मेटोलॉजी की थी, और डॉक्टर साहब को नहीं पता था कि पिम्स के अंदर 5,000 पेशेंट्स हैं, और 2005 से पिम्स में क्लिनिक काम करे. तो हम
we haven't reached to those who are the other people. तो नॉन HIV लोगों के साथ मैं वर्ड यूज करता हूँ, केयर यूएस ने भी काम किया और कंसर्न ने भी, मेन स्ट्रीमिंग. तो जो लोग HIV में काम नहीं कर रहे उनको भी बुला के बताना, सर्जरी वालों को, गायनी वालों को, कि भाई HIV ये है, इट्स नॉट. इसका जो हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी का कंटीजियस होना इससे बहुत ज्यादा है, 3 to 6% है, इसका 0.1 to 0.3% है. तो सारी WHO की स्टडीज कहती हैं कि ये लेस कंटीजियस है लेकिन स्टिग्मा ज्यादा है. तो इसको हमें, इस बात को हमें मेडिकल स्कूल में, नर्सिंग स्कूल में, हॉस्पिटल स्टाफ में, एडमिन को, सबको बताना है. और ये एक जहद मुसलसल है, ये इट्स नॉट वन टाइम मैंने वेबिनार कर लिया कोई एक महीने तक वर्ल्ड एड्स डे पे. हमें स्टिग्मा पे कोई 4 साल पहले 2017 में एक TOT कराया था WHO और UN एड्स ने, मैं उसका हिस्सा था. और उसके बाद मैं फिर बैठा नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने फ्रॉम लियारी टू अक्रॉस कंट्री, मैं जहां भी मेरी आवाज पहुंचती है मैं करता हूँ. तो मेरी सबसे गुजारिश है कि हम स्टिग्मा पे एक TOT डिजाइन कर लेते हैं. हम जो HIV के टॉर्च बैरियर्स हैं, खासतौर पे ART सेंटर में काम कर रहे हैं या पंजाब किसी भी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में, फेडरल या प्रोविंस में, हमें स्टिग्मा पे लॉन्ग टर्म काम करना है. अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके सवालों को थोड़ा सा देख लूं. मैंने उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया था. आपका जी मैडम, मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साइमा? जी आवाज आ रही है जी. मैं कोशिश करता हूँ ब्रीफ करूं. आपका सवाल था कि ये जो मॉडल है इसको कैसे लेंगे मेडिकल कॉलेज. मेरे ख्याल है पब्लिक सेंटर में बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर हम मिनिस्ट्री को इसमें एडवोकेसी करके फेडरल एंड पंजाब प्रोविंसेस में बात कर लें कि तमाम मेडिकल कॉलेज के प्री रिक्विजिट में हम ID क्लिनिक डाल लें, which will be more start from HIV. और डेफिनेटली ID के अम्ब्रेला में HIV के लिए स्पेस मिल जाएगी. और दूसरा आपने कहा था कि इसको कैसे शुरू किया जाए, तो मेरा ख्याल था कि PMDC के साथ और जो प्रोविंशियल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज के साथ हम इस पे हम डिस्कशन शुरू करें. आपने कहा था कि डेफिशिएंसीज क्या हो सकती हैं और क्या गैप्स होंगे. तो मेरा ख्याल हुई, जो मैं बता चुका हूँ, कि डेडिकेटेड डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट है वो है, डेटा टी ऑपरेटर है, लेकिन सवाए पंजाब के पूरे पाकिस्तान में डेडिकेटेड HIV फिजिशियंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं है. जबकि शौकत खाना में, इंडस में, आगा खान में है. तो इट इज अ प्योरली अ पब्लिक सेक्टर इशू. दूसरा कि गवर्नमेंट के अस्पतालों में खासतौर पे प्राइवेसी का और कॉन्फिडेंशियलिटी का जो HIV की प्री रिक्विजिट है कि उसका मोड स्प्रेड हम किसी से शेयर ना करें और उसके स्टेटस को शेयर ना करें. गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में प्राइवेसी के इश्यूज हैं बिकॉज स्पेस के इश्यूज हैं, और गवर्नमेंट के स्टाफ की ट्रेनिंग इसमें ज्यादा हमें चाहिए होगी. इसी तरह आपका सवाल था कि मेडिकल कॉलेज रिस्पांस क्या होगा. मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा आपको वेलकम नहीं करेंगे. मैं लास्ट वीक जो फेडरल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, TB हॉस्पिटल, मैं वहां गया था. मेरा वहां पे प्रेजेंटेशन थी और वहां मैं 8 से 3 बजे तक मैं उनके साथ डिस्कशन में रहा और तमाम डॉक्टर्स ने रिफ्यूज कर दिया कि, और मेरा सिर्फ ख्याल था कि TB के जो पेशेंट्स हैं उनका HIV देखा जाए. इसमें एक सेकंड में हेडफोन लगा लूं, बच्चे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे, अगर आप एक मिनट दें. हेलो. हाँ जी जी सॉरी, मेरा इसमें ख्याल था कि मैं काफी डिसहार्ट हुआ था कि उन डॉक्टर्स ने कहा हम TB देख रहे हैं. मैंने कहा आपके मरीजों को HIV होगा तो आपको हम अंडर वन रूफ सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्लेनली मेरी बात को, जबकि एडमिन का प्रेशर था, दे रिफ्यूज्ड. तो पब्लिक सेक्टर में जो एक इशू कैपेसिटी का भी है और जो पक्की नौकरी का कंसेप्ट है, काम ना करने का रवैया, तो वी नीड मोर ट्रेनिंग्स एंड मोर इंसेंटिव्स फॉर दोज पीपल हु विल वर्क फॉर HIV. आपने हर्डल्स की बात की, तो मैंने कहा एक तो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं कि मिनिस्ट्री को ये बात समझाना, और जो लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड पे उनका इंटरेस्ट कि मेडिकल कॉलेज के अंदर इसको मेन स्ट्रीम किया जाए. आई डोंट नो कि प्रिंसिपल्स कैसे रिसीव करेंगे इस बात को मेडिकल कॉलेजेस के. अगर हम जी बिल्कुल इसमें गुंजाइश है, लेकिन हाउ वी पैकेज, हमें ख्याल है 1 to 2 पेजर डिजाइन मिलकर ना बनाना चाहिए, पेपर कंसेप्ट नोट के हम क्या करना चाह रहे हैं. जो डॉक्टर फिजा की प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है, उसको हम कन्वर्ट कर लें अगर वर्ड में, और हम उनको उनसे टाइम लें, और हर प्रोविंस अपने अपने मेडिकल कॉलेज की, और आखिरी चीज है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी भी हम ये PMDC से बात करें कि उनकी जो रजिस्ट्रेशन में हम ये डाल दें कि वो ID क्लिनिक बनाएंगे. जी प्लीज, आई एम ओवर. चलिए, थैंक यू सो मच. Thank you, Dr. Zumair, for some good ideas. चलें, Dr. Asma Naseem,
go ahead. आप कब से comment करना चाह रहे हैं? जी थैंक यू सो मच. मेरी आवाज आ रही है? जी 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 अभी हमारी चैट में यही डिस्कशन हो रहा था. मैं यही कहना चाह रही थी जो डॉक्टर इदरीस ने स्टार्ट किया था कि मेडिकल स्टूडेंट तो ठीक हैं, शायद उनको स्टिग्मा वगैरह के बारे में पता चल जाए, लेकिन सबसे जो मेन गेम चेंजर होंगे वो होंगे हमारे रेसिडेंट्स जो रोटेशंस कर रहे होते हैं अंडर सीपीएसपी. सो सीपीएसपी में अगर हम मैंडेटरी बनाएं, जो हम चैट में भी अभी हम सब एग्री कर रहे हैं इस बात पे कि सीपीएस के प्रोग्राम में जो भी रेसिडेंट्स हैं जितने भी स्पेशलिटीज के वो 2 वीक्स की रोटेशन करें HIV सेंटर्स में और वहां से सर्टिफिकेट लें मैंडेटरी विद अ मैंडेटरी 2 वीक्स मे बी ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ HIV ट्रीटमेंट एंड स्टिग्मा. तो इससे ये होगा कि जब ये बड़े होंगे और डॉक्टर्स बन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स बनेंगे तो उनके अंदर वो स्टिग्मा वाला कहानी होगी नहीं, वो डर और खौफ हो गई नहीं. तो एक तो ये हम कर सकते हैं कि सीपीएसपी को प्रेशर डालें और फिर सीपीएसपी को कहें कि भाई किस तरीके से ये किया जाए. और CPSP क्या है? सीपीएसपी इज कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन, जो कि हमारे रेसिडेंसी प्रोग्राम रन करते हैं और स्पेशलिस्ट बनते हैं. ये इंटरनल मेडिसिन में, फिर सर्जरी में, गायनी सारा है, वो पूरा सेटअप है बहुत अच्छा सा, तो वो हम उसमें डाल सकते हैं. और जो डॉक्टर उमेर कह रहे हैं कि आईडी मतलब HIV क्लिनिक को ID क्लिनिक में, इट्स अ वेरी एक्सीलेंट आइडिया, लेकिन उसमें फिर जो है चूंकि ID चूंकि ID डॉक्टर्स बहुत कम है, तो हम FCPS मेडिसिन जो होंगे, जो CPSP से जो मेडिसिन में जो ट्रेनिंग हासिल कर चुके होंगे उनको वहां बिठाएं, ना कि RMOs को. वो RMOs बेचारे बहुत छोटे लेवल के हैं और उनको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और उनको बहुत समझाना और सिखाना पड़ता है. FCPS ट्रेंड अगर डॉक्टर वहां बैठेगा, जो कि गवर्नमेंट कर सकती है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकेगा. और फिर हम मीन्स के ID कंसल्टेंट जो हैं उनके साथ लाइव करें और हम कॉम्प्लेक्स केसेस देखें. तो ये बड़ा अच्छा सा टीयर्ड सा बन जाएगा, जैसे डॉक्टर फिजा ने बताया कि जैसे वहां पर आप लोगों ने किया है सेंटर में कि पूरा एक मल्टीपल केयर, HB, HC, STI सब कुछ उसी में डाल दिए गए, ID बना दिया गया उसको. तो इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया. ये मेरा कमेंट था. थैंक यू सो मच डॉक्टर आसमा. यस जी डॉक्टर अफशां, आप बताएं. Dr. Faisal and Dr. Asma and Dr. Idris and then Umair very clearly उसको mention किया. एक चीज बस मैं इसके अंदर reiterate करूंगी कि CPSP is like the academic side and the government side. You see, जब तक दोनों एक साथ, they won't come together. And why I say that, because BJ in the initial part of our conversation said that many things are present in paper, but when it comes to its letter and spirit on the ground, it is not there. So many of the universities and academic institutes to him, they have got their own syndicate boards. So if we approach them individually, they will agree to it. But when it comes to the implementation on the ground at every ART center, or if not every, many ART centers, you will definitely inadvertently need the support of the government for its true implementation. So they have to go hand in hand, and it should be it should be I would say it should be a side-by-side approach rather than take for one at a time. We can ask both things, and they work under the Ministry of Health. Both of these works independently and semi-independently, because the ART centers are overlooked by the government of Sindh, the provincial and the National AIDS Control Program, while the universities have their independent syndicates. So some of them are autonomous, some of them are semi-autonomous and private institutions. So it should be approached in this manner. This was my suggestion. Thank you very much. Okay, thank you so much, Afshan, for that practical point. Because you need cooperation of both the ART centers and the medical colleges. That's great. Hanji, Bushra, you had raised your hand earlier. So, Saima, here I want to, मैंने अभी chat में भी लिखा है कि हमारा ultimately plan ये है कि हम ये सारे comments जो chat में आ रहे हैं या जो questions में सारे और अपने प्रेजेंटेशन इनको हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे इस प्रोजेक्ट का, इंक्लूडिंग ऑल दीज सजेशंस. और इंशाल्लाह आफ्टर, और ये हमारा वर्ल्ड एड्स डे का रिपोर्ट होगी. उसके बाद हम इसको यूज करेंगे टू टॉक टू डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, डिफरेंट मेडिकल स्कूल्स और वेयर एवर पॉसिबल. और उसके लिए हमें जितनी टीम इस वक्त मौजूद है,
sorry, we need everyone on this. चलें. Does anybody have a comment? Or? जी जी, दो कमेंट्स थी. एक तो फंडिंग पे थी, देयर आर फंड्स अवेलेबल. जो डॉक्टर खुदादाद ने पॉइंट रेज किए थे उसके ऊपर सिर्फ ये कमेंट करना चाह रही थी कि deliveries or surgical procedures and linking CBOs and key populations with healthcare facilities जहाँ सेहत सहूलत कार्ड अवेलेबल था, इस सब की फंडिंग अप्रूव्ड आ चुकी है. CMU के पास है, it's just that they don't know what to do with it. So funding is not an issue. You have to have the right people to run these. दूसरा ये है कि this concept of adopting an ART center, इसको बहुत बड़े पैमाने पे शुरू नहीं करना होगा, इसको चंद सेंटर से शुरू करना होगा who are willing, who are enthusiastic and who agree to the concept. क्योंकि जब ये एग्जाम्पल्स क्रिएट होंगी शुरू में अच्छे सेंटर से, तो फिर दूसरे लोग भी ज्यादा विलिंग होंगे उसको एग्जाम्पल को फॉलो करने में. Okay, that's true. That's a great point, Bushra. We will need your help to identify because we are not on the ground there. And please, this is a request to all the participants कि आपको जहाँ पे लगता है स्टिग्मा कम है, जहाँ पे लोग willing हैं. So we are all going to go to our own alumni and initiate these conversations. But please, at your end, identify those and please join our core team to move forward with this idea. We need all hands on deck. Let me put it that way. Jennifer, any final comments, or if anybody else wants to comment? नहीं, मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने पैनलिस्ट हैं, और साइमा आपका और फौजिया का, and everyone. So this is very useful and very constructive, actually, very positive discussion going on. And inshallah, we'll all together make a difference. And inshallah, we'll start this project in few medical colleges early next year, inshallah. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you. Allah Hafiz. Allah